You guys have 5 more minutes. Three more minutes. Okay, start sending the answers, guys. Please, Hanifa, Rifat, and Stan. Yes.
Oh, what happened, guys? Please send the answers. हनीफा, जितना हुआ उतना भेज दीजिए, no problem. चलिए, काफी सही रिफत. Most of the things are correct. When I will write the answers, you will get to know. Just waiting for now, Zad and Hanifa. Please send the answers, guys. It's already been time. Hanifa, please send the answers. Zad, please send the answer. Sir, can I send the last one to editor? You can send it now also, no problem. Okay, Hanifa. Hanifa, were you present in the last lecture? I wasn't there on Sunday. You were not there on Sunday? No. Okay. So did you watch the lecture? I will. I will watch it today. Could not understand. Can you speak properly? Can anyone understand what Hanifa is saying? Are you well, Hanifa? I will watch it today, sir. You did not watch it. Why? It's been a week, na, Hanifa. Last time also you did the same thing, right? फिर कैसे complete होगा आपका syllabus? If you're not watching the lecture, and it's evident that you have not done by yourself also, that you're not reading it also, है ना? Hanifa, tell me what is the problem? Turn your mic on. You did not attend Sunday's lecture, that's fine. होता है कभी कभी. But why you did not watch the lecture, Hanifa? I didn't get time, so. Do you believe in that reason, Hanifa? Do you really think that is the reason? You understand what you are saying, right? You had 5 days in which there was one Friday also. अच्छा, were you somewhere else? Like आप कहीं गए थे क्या? तो फिर बताइए. Or were you at home? I was in India and I came back to Saudi 2 days back. You came back to Saudi 2 days back. Okay, fine. So इस तरह से how many lectures have you missed till now, Hanifa? Do you have a count? No? I saw a few lectures. Zaid, आपको तो अच्छा, you have saw. Okay. Zaid, आपका नहीं आया अभी तक आंसर? So I made some mistake. I am sending again. Okay, let us look at the first one. So in first one, here what we have to do is, first of all, we have to classify whether something is alcohol or phenol. And from the last lecture, we know that alcohol is less acidic than phenol. So then we have two alcohols. In that, we know for alcohols, the acidic strength, it increases. If I have 1 degree, then 2 degree, and then 3 degrees is the least acidic.
This is the alcohol which is 1 degree. This is the alcohol which is 2 degree, right? Yes or no? Yes. Okay. So here you can see that which is more acidic, A or B? So B. A और B यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है ना हमने, उसके बाद भी So आप लोग A. कैसी बातें कर रहे हैं? A will be more acidic, right? So B is the least acidic, followed by A. Now we have all the phenols. So A is done, B is done. Now we have all the phenols. Now in phenols, first of all, we will identify which is plus I and which is, we will identify the electron withdrawing group and the donating group. So this CH3 is plus M. NO2, since it is in the meta position, it is not showing any plus M or minus M effect. It will only show inductive effect because in meta position, the resonance effect is not considerable. It does not have any effect. Now this nitro is minus M. Now we know that for phenols, substituted phenols, the acidic order is minus M has the highest, followed by minus I, followed by none if you don't have any group, and then followed by plus I, and at last is plus M. So from here we can identify that out of these phenols, the most acidic is minus M, then we have minus I, and then we have plus M. So plus M is the least acidic of its different phenols. So we will have C, and then we will have D, and then we will have E. So Rifat, can you see where you made mistake? Yes, sir. Okay. Same goes for Z. Yes. Can you see? Okay. Now see here. Now Mg has what valency? Please tell me, guys. What is the valency of Mg? क्या charge होता है Mg पे? If Mg does any reaction, what is So the valency on Mg? plus, It is plus 2. Correct. Now since it is plus 2, there will be 2 alkoxide, CH3, CH2O whole twice, Mg, and plus H2 is also, you have to write also H2. Now for CH3OH, here we have aluminium. Aluminium has a charge of plus 3. So the CH3O will be thrice, and then aluminium. Now in concentrated H2SO4, water निकालते हैं हम लोग. So in order to remember it, you can remember it anyway. But exactly क्या होता है? The hydrogen from alcohol and OH group from the carboxylic acid, they form water. And you can see we have now remaining CH3 C double bond O from the carboxylic acid, and we have OCH3 from the alcohol. Plus I will get water. Now in this case also, the hydrogen it leaves, and from here the Cl will leave. And as you can see यहाँ पे देखिए carbon or oxygen OH है ना? So this is the carbonyl carbon, and the carbonyl carbon has some electronegative atom here. Okay, so that completely goes away. So here we have Cl, so that will completely go away, and from here hydrogen will go away, so we'll make HCl, and the other product will be CH3 C double bond O from the acid halide, and OCH3 from the alcohol, plus we'll get HCl. Okay, चलिए. Now write next. अगर आपने नहीं लिखा है then no problem. ठीक है, आपको खुद से सोच के ध्यान लगा के लिखना है कि हमने यहाँ पे क्या आंसर्स लिखे थे. चलिए. Moving to next, please write reactions involving cleavage of COH bond. Okay, so when this bond will cleave, then what are the reactions? So in general, first of all, we'll write, we have carbon, which will be attached with 3 groups. And then there is one OH group here. Now, if this bond is, so how will this bond particularly break? This bond will break and the carbon will lose its electron. The carbon will lose its electron, okay? Because it is attached with a more electronegative OH atom. So if this is going to break here, okay, if this is going to break, then carbon will lose the electron from the bond. Okay. Now, if this bond is more polar, then breaking this bond will be easier. So write the first point. Higher the polarity,
higher the polarity of COH bond, easier it is to break the bond. Okay, so here oxygen is having delta negative charge, right? And the carbon will be having delta positive charge, right? Delta positive charge. Now, if in carbon atom we have any group which is increasing the electron density towards oxygen atom, then it is increasing the delta negative, and the delta positive for carbon will also increase. So what we have to do, we have to increase the electron density around oxygen atom. Okay, and in order to make that, we will attach electron donating group on the carbon atom, which will further increase the electron density at the oxygen. So please write as the number of alkyl group, as the number of alkyl group as the number of alkyl groups on alpha carbon of alcohol increases. Okay, so this is the alpha carbon. As the number of alkyl group, they will increase. What will happen? Electron density around oxygen atom will also increase. Electron density around oxygen atom also increases. Okay, it will also increase. Now, if the electron density increases, what will happen? It will make the bond more polar, making the bond more polar and easier to break. Okay, therefore the reactivity of different alcohol follows the following order right here. Reactivity order. Here 3 degree will be most reactive, followed by 2 degree, followed by 1 degree alcohol, and the least reactive will be CH3OH. Okay, so this, as you can see, it is completely different order of reactivity when I compare it to the OH bond reactivity. Okay, so then you'll write the first reaction. So most of the reactions that we are going to do today, you have already seen these reactions in the previous chapter, that is haloalkene and halorine. तो बहुत ही जल्दी चलेंगे इनसे, ठीक है? चलिए, I hope everyone is done. Right, the first reaction. A reaction with hydrogen halide. Please write with me. Alcohols react with hydrogen halides are HX. React with HX to form haloalkenes. Okay, simple reaction. General reaction is any alcohol. If it reacts with any HX, then it is going to give me RX plus water. Okay, so alcohol with HX is going to give me alkyl halide. If I talk about the reactivity of different type of HX, reactivity order. So the reactivity order for HX will be, so here HI will be most reactive, followed by HBr, followed by HCl. Okay, and HF it does not react because of very
strong bond between hydrogen and fluorine, and those are also very small atoms. So their bond length is also very small. If the bond is small, that means the nuclei of atoms are very close together, and you cannot break them. Similarly, if I talk about hydrogen and iodine, then hydrogen is from the first period, iodine is from the fifth period, right? And they have bond length which is very long, so it is very easier to break that bond. That is why this is the reactivity order for HX. For ROH, that means alcohol, we have already seen that 3 degree will be most reactive, followed by 2 degree, followed by 1 degree, and then followed by CH3OH. I hope all of these reactivity order makes sense to you guys. Okay, write this down, then I will write some remarks. Please let me know if you're done. Hanifa, Rifat, and Zad, no doubt here, na? समझ में आ रहा सब? Yes. Yes. Okay. How was your trip, Hanifa? India ka? Lot of travel. Not good. What did you say? I had to travel a lot. You had to travel a lot. Did not enjoy that much. No, because all that traveling made me sick. That's it. Oh, it made you sick. So, like, do you have some kind of what can I say? I cannot say condition, but some kind of you are not habituated with traveling so much and traveling in small cars or buses or trains. Yes, Huh? I have motion. Yeah, I have motion sickness. Oh, you have motion sickness. Okay. So I hope your school is nearby your home. Yeah, it's 10 minutes drive. Oh, that's nice. Okay. Now we'll write some remarks. As you can see that this CH3OH and 1 degree alcohol, these are what? These are very less reactive towards the hydrogen halides. And here HCl is also what? HCl is also very less reactive. Now, when we have 1 degree or 2 degree alkyl halides, we need some catalyst. So please write due to lower reactivity. Of 1 degree and 2 degree alcohols with HCl, anhydrous ZnCl2 is used as a catalyst. You write next. The reagent HCl plus anhydrous ZnCl2 is known as dash, and you will answer me in chat. Okay, please answer this dash in chat. What is this reagent known as? This is from haloalkane halorine. You can flip your pages, है ना? आप ढूंढ सकते हैं. It is there. And this same reagent, that is dash, you'll fill it up. नहीं ज़ैद, ऐसे तुक्का मत मारिए please. Dash is used for distinguishing between one degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. Please. Acha, by the way, if you give me right answers, then I mark you guys, okay? Report card आप लोगों को मिला क्या? Hanifa, Rifat, Zad, recently, did you get any report card? Yes, sir. Progress. हाँ, progress report. Yes. Zad, can you send me yours? Zad, जिसको भी Yes. मिला, if you
सिर्फ आप लोग को मिलता है या आपके पेरेंट्स को भी मिलता है? नहीं मिलता पेरेंट्स को यानी। ओके, Yes, I have sent. ये आप सेंट, ओके। किसको भेज दिया आपने? मेरे पास तो नहीं पहुंचा है। हाँ, वेरी गुड हनीफा, करेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है बेला। यू हैव गॉट फॉर, दिस इज द लेटेस्ट। So I don't know. Yeah, this is the latest one I got. बाई वीकली इन्होंने तो गलत लिखा हुआ है। बाई वीकली कुछ नहीं होता है। बाई वीकली का मतलब हफ्ते में 2 बार थोड़ा ना भेजते हैं। I mean, I think it means both the things, but fortnightly is a better word. बाकी को नहीं आया ये रिएजेंट कौन सा है? हाँ, जैद एंड रिफत। HCl plus anhydrous ZnCl2। आप लोगों ने कोशिश भी की, थोड़ा जाइए देखिए अल्कोहल्स कहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। हैलोल्किन हैलोरीन में है ना, प्रिपरेशन में है, प्रॉपर्टीज में है, या फिर कहाँ पे है? यू So सी can I देयर। tell the first word? फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड तो जो नाम है रिएजेंट का, फिर दूसरा वर्ड तो रिएजेंट है। एक ही वर्ड का यहाँ खेल है सारा। Sorry, sir. First letter. फर्स्ट लेटर, अच्छा, एल। Lucas region. हाँ करेक्ट, लुकास रिएजेंट। कुछ ही रिएजेंट्स पढ़े हैं आपने, है ना, उसी में आपने मार दिया लुकास रिएजेंट। चलिए, रिफत अभी आपको याद आया, अभी भी नहीं याद आया? यस सर। बताया क्या अभी? ओके, राइट। क्या लिखाने वाले थे हम? हाँ, राइट नेक्स्ट। Alcohols and Lucas reagent are soluble, but chloroalkane is not soluble in water. Hence it forms turbidity। ठीक है, सो हल्का व्हाइटिश टाइप का लेयर या ऑयली टाइप का लेयर एक आ जाता है व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ दीज। देखिए क्या होता है, वी हैव, दिस इज क्रिस्टल क्लीन अल्कोहल, डोंट राइट दिस,
This is crystal clean Lucas reagent. Both are soluble. कुछ नहीं हो रहा है इसमें. But when I mix these things, I get some kind of turbidity here. Now this is strange. This can only happen if both of these things are reacting. Okay. And when the turbidity is formed, that is important in the distinguishing of 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. If I have 1 degree alcohol, and I add here the Lucas reagent, okay, and I add here Lucas reagent, then I get turbidity. But this turbidity requires some heat. Without heat, I will not get any turbidity. Similarly, if I have 2 degree alcohol, here if I give Lucas reagent, this will also give me turbidity. But this will give me after 5 to 10 minutes. Okay, so 1 degree requires heat, temperature, 2 degree requires time, 3 degree does not require anything. 3 degree alcohol में सिर्फ आप अगर HCl भी डालिएगा तब भी ये turbidity दे देता है. But here we are adding Lucas reagent to be consistent and we get turbidity. Immediately. For example, just write some reactions. Okay, please write the product cost. I'm believing. You don't have to send it to me, but I hope you're writing the right products. Okay. So here I will get Cl. Here I will get Br. Here also I will get Br. Write some note. One degree alcohols react with HX via SN1. Sorry, via SN2. 1 degree है तो SN2 होता है. Via SN2. That means see, first of all, we have HI. HI will break apart into H plus and I negative, right? H plus and I negative. Then we will have alcohol. So I'm taking a simple alcohol like this. ठीक है, 2 carbon का है. This is 1 carbon, 2nd carbon, and we have OH group. So this OH group, it will first of all attack the H plus ion. And what I will be getting here, I will be getting 2 carbons, 1 oxygen. This oxygen has 2 hydrogens. That is why this oxygen gets a positive charge. Now, once it gets positive charge, what will happen? This bond will break and it will give out water. So minus H2O. At the same time, this I negative
it will attack on the carbon atom like this from backside. And I will be getting see backside attack and then the leaving of leaving group. Right? So leaving group is leaving and the nucleophile is attacking here. So SN2. Now one step, single step reaction. This is ये जो है आपका step that is just showing you that H plus will it auto ionization है ना, इसमें कुछ role नहीं है इसका. That is why this reaction is the main reaction. I negative attacking on the carbon atom and OH2 leaving, and I will be getting instead of OH in the starting I will be getting iodine. Okay, so this is a simple 1 degree alcohol that is reacting with HX via SN2 mechanism. But 2 degree alcohols react with HX via SN1. Okay, right next. 2 degree alcohols react with HX via SN1. Now, if it is SN1, then there is a formation of carbocation. Hence, quite often they give rearranged product. Okay, so 2 degree alcohol via SN1, then you will write, and hence quite often they give rearranged product. Okay, now ये जो है important है because ये सवाल एक बार आया, सवाल तो आपके NCERT में ही है, and it has also come twice in the CBSE board examination. So please ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है? I hope you have written the SN2 part. Now you will just see the SN1 part here. So they have in your NCERT a question in which they give you an alcohol CH3, carbon atom with one hydrogen, and the other group is CH3, further bonded to carbon with a hydrogen and OH group. And then it is further bonded to CH3. This is a 2 degree alcohol. And when we are doing a reaction with HBr, we expect that this carbon atom, second carbon atom from here, it should get the Br, and the OH should be removed from here. But instead we see that we get CH3, this carbon atom, which is a 3 degree carbon atom, it is getting the Br, and this carbon is getting 2 hydrogens now, and then followed by CH3. Now they're asking you to explain the mechanism of this reaction. So please listen here. In the first step, I will show all of these things in the bond line structure. So we have 1, 2, 3, 4 carbon atoms. This second carbon atom, it is having a CH3 group here. Okay, and it is having a, let me show the, it is having a hydrogen here, and it is having a CH3 group here, right? This carbon atom is having one OH group. Okay, so let me write the OH group like this only. Okay, and then this is CH3. Now the first thing that is going to happen is we will have H plus from the HI. है ना? तो ये reaction तो होगा ही. This reaction HI will dissociate into H plus and I negative. So for us right now only H plus is required because that is going to get attacked by the lone pair electrons of oxygen. This OH is going to attack the H plus ion, leading to formation of a protonated alcohol. Hydrogen, and this is now OH2 positive. As soon as we will get this OH2 positive, and this is one CH3 group which is attached, what is going to happen? This is going to break. It will give its electron to oxygen, which is more electronegative atom, leading to formation of a carbocation. So here I will get a positive charge. Here we already had a hydrogen atom, and here I will be having CH3 group as it is. As you can see, एक step कर रहे हैं बिल्कुल. Oxygen atom attacked hydrogen, so hydrogen attached on the oxygen, and oxygen got a positive charge. Now this CO bond breaks, and what do we get? A carbocation, and everything else is same. ठीक है, जहाँ पे reaction हो रहा है वहीं पे बस आप देखते रहिए. Now what is going to happen? There is a hydride shift going to happen. This hydride ion will move to this carbon atom. Okay, this is known as what? 1,2 hydride shift. I hope you remember this from haloalkane and halorine. वहीं पे हमने पढ़ाया था और ये भी कहा था that we don't have any specific reaction in Fatima. Okay. So 1,2 hydride shift.
Hello, Fatima. I think she said sorry and left. Okay. Now this hydrogen is going to come here and it is going to neutralize this carbocation. And then a further carbocation will be formed here, right? And this has got hydrogen. So I will not write anything because hydrogens are not written explicitly. Then will come our iodine negative. ये तो आपका पूरा reaction ऐसे ही होगा, one-sided होगा. This iodine negative will attack on this carbocation. Oh, sorry. यहाँ पे Br था हमारे पास. My bad. Br negative will come. Okay, so this Br negative will come here, attach on this carbon atom, and the CH3 will be as it is. Okay, so please write one step at a time. Understand each and every arrow. So these arrows are very important. Okay, understand each and every arrow. So each and every arrow you will see now it starts from a electron source. जहाँ पे electron ज़्यादा है, देखिए. So we have a lone pair electron यहाँ पे. यहाँ पे हमारे पास क्या है? बॉन्ड है, तो बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ कहाँ आ रहा है? इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए Br नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज अटैकिंग कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड पे. तो ये जो अटैक का नेचर है दैट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी रिएक्शन. दैट अटैक स्टार्ट्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सोर्स. और दूसरी बात, हमेशा अटैक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सोर्स पे होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स को ना कोई जरूरत नहीं है डिफिशिएंट सोर्स पे अटैक करने की, वो रिएक्टिव नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है दैट इज मोर रिएक्टिव बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स अपने खुद ब खुद ही क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो द रिएक्शन का जो मेजर पॉइंट है दैट इज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड एंड उसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच साइड. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही बिकॉज उसके पास कोई दूसरा न्यूक्लियस है नहीं, एक ही न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है. दैट इज वाई द लोन पेयर अटैक्स. ठीक है, अब अगर आप बात करें ना, थोड़ा ध्यान हो अगर आपको, देन वी हैव द लोएस्ट लेवल इज सिग्मा. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो रिएक्टिव होता है दैट इज पाई, एंड देन द मोस्ट रिएक्टिव इज द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमेंबर इट लाइक दिस. ठीक है, सो ये ऑर्डर हमेशा याद रखिए कि जहां पे आपके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे पाई और सिग्मा अटैक नहीं करेगा, जहां पे पाई होगा तो वहां सिग्मा अटैक नहीं करेगा, है ना. सिग्मा से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा. जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, दैट इज व्हाई व्हाट इज अटैकिंग हियर, सिग्मा इज अटैकिंग. Also sigma attacks when it is very 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 near to it. So we have hydrogen here, just उसके adjacent carbon में I have a positive charge, so that is why it also attacks because the orientation is also same. फिर इसको लिखिए पहले. This is important. Okay, this is very important. They can ask you directly this. अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स के लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दैट इज दिस क्वेश्चन. हनीफा एंड रेफर डन? Yes, sir. Okay. दूसरा, so I will give you one more which is showing methyl shift here. Okay, just showing methyl shift and it happens with neopentyl alcohol. ठीक है, neopentyl alcohol is one of those alcohol which is 1 degree but it is still going through SN1 reaction. We will show why. First of all, we have CH3 carbon atom, CH3, and then again a CH3, and this whole big group, it is attached to a carbon atom, CH2, and then OH. Now this is my alpha carbon. This alpha carbon is attached to only one carbon atom, that is why this is 1 degree, but because of this very big group it undergoes via SN1 mechanism and not SN2 mechanism. Okay, I think we have written this point in the haloalkane halorine chapter also, that neopentyl halides, they undergo SN1 and not SN2, even they are 1 degree. So here also we are reacting this with HBr. We are expecting that this OH will be replaced by Br, but actually what happens is that we get CH3 carbon atom and the Br gets attached here. This CH3 is as it is, followed by CH2, and this CH2, rather than having OH, it gets a CH3 group. So what is happening here? Please see, we have 1, 2, 3 carbon atoms. So we have 1, 2, 3 carbon atoms. Third carbon atom is attached with OH. Second carbon atom has 2 CH3 groups.
So the first attack will be, देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, आप लोग को क्या करना चाहिए, हम तो बताएंगे ये क्या होने वाला है ना, you should be in your head only saying कि क्या होने वाला, पहला अटैक किस पे होगा. So we have HBr. HBr से हमारे पास आएगा H plus ion, right? We will get the H plus ion from the HBr. This will be attacked by the lone pair electrons of oxygen atom. Then what we are going to form? We are going to form OH2 positive. We are going to form OH2 positive. Now, when the OH2 positive is formed, it will take the electrons from this sigma bond of carbon-oxygen bond, and then further it is going to lead to a formation of carbocation, which is 1 degree carbocation. You will have CH2 positive. Now, this CH3 from here, it is going to attack on this carbon atom. Now, this is 1,2 methyl shift. Now, this CH2, it gets a CH3 atom, CH3 group, and this carbon, it gets a positive charge. Now, further Br negative will come. ये खैर ये रिएक्शन तो आपको वन साइडेड ही हुआ. Okay, and I will be getting Br atom like this. 1 degree, and this is what 3 degree alcohol, 3 degree carbocation. This is more stable. Okay, so write this example also. This is not there in the book, but ये वाला सवाल है इसके पहले वाला, ये भी आ सकता है ना. Similarly यहाँ पे आप लिख लीजिए, this is 2 degree and this is 3 degree. 3 degree is more stable. अब ये सारे जो मैकेनिज्म है ना, आपका काम ये बनता है क्लास खत्म होने के बाद इसको रिपीट कीजिए. ठीक है, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, 2 दिन बाद ये चीजें समझ में नहीं आती है, तो हमेशा रिपीट करना ही क्या है, एक उपाय है. You have to keep reminding yourself about these simple things. Then guys, yes or no, please tell me. Yes, sir. चलिए अब लिखिए रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड. इसमें कुछ खास नहीं है. दिस इज द सेकंड रिएक्शन, राइट? रिएक्शन विथ phosphorus halides. Please write here various phosphorus halide. React with alcohol to form haloalkane. Okay, to form haloalkane. We have ROH. अच्छा चलिए आपके इसमें तो नहीं कुछ है. RX plus POX3 plus I will get HX here. Okay, I have not. This is not a balanced chemical reaction, and you don't have to worry. ये चीज हमने पहले ही बताया that in organic chemistry you don't have to worry about the balancing of chemical reaction. You have to more worry about the main organic product that you are getting in the product side, H3PO3. ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं हम, इनको खुद से ही आप कंप्लीट कीजिएगा. CH3 CH2OH PCl5 PCl3 PBr3 PI3.
प्लीज कंप्लीट दीज रिएक्शंस, है ना। जनरल फॉर्मूला आप देख लीजिए, Px3 है तो क्या रिएक्शन हो रहा है, Px5 है तो क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड उस तरह से आंसर कीजिए एंड देन सेंड इट टू मी, लेकिन जल्दी भेजिएगा प्लीज, देर मत कीजिएगा। अच्छा, ऑल्सो एक और चीज हम बता रहे हैं, हालोअल्कीन हालोरीन का जो चैप्टर है ना, उसके अंदर आप लोग देखिए आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको करना है एनसीईआरटी से ही कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी सवाल हम लोग दे रहे हैं ना, सोल्यूशन चैप्टर में भी यही था। सारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। और कोई ऐसा भी सवाल नहीं जो हमने क्लास में नहीं कराया है, सारे जो सवाल है वो क्लास में ही कराए हुए हैं। रिएक्शंस, उसके बाद थ्योरी है जो फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, उसको भी पढ़ के आइएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। एंड ऑल्सो सी दैट देयर आर मेनी वाई क्वेश्चन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना ही है, उसी में आपका हो जाएगा, नथिंग इज देयर। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सवाल, बस, ठीक है। इन्हीं को कीजिएगा, इतना ही तैयारी कीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप सवाल लगाइए एनसीईआरटी के, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तब आप नोट्स के पास जाइए, बिकॉज आपने चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आप सवाल को समझ सकते हैं एटलीस्ट, और सवाल पढ़ने के बाद आपको ये पता लग सकता है दैट यू हैव टू गो ऑन विच टॉपिक, ठीक है। आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, हाँ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग उसमें, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास था रिएक्शन, एक तो आपका एसएन वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। इस तरह से आपने दिमाग में उसको क्लासिफाई करके रखी। उसके बाद जब हैलोअरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज आए, हैलोअरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास था सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट वाज द मेजर चंक। देन उसके बाद था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाई दे आर नॉट फीजिबल फॉर डूइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दीज फॉर्मेटिंग थिंग्स, उसके बाद जो इंडेक्स है एक चैप्टर को आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, सो दैट यू नो कि कोई भी सवाल है तो कहाँ प्रेफर करना है, ठीक है। प्लीज ये अप्रोच अपनाइएगा, नोट्स मत पढ़ते बैठ जाइएगा, ठीक है। अभी सवाल लगाने का टाइम है, नोट्स पढ़ने का टाइम अभी नहीं है। जब भी एग्जाम होता है तो आप सवाल लगाइए, ठीक है। एग्जाम्स में ना ये चीज हम बारहा कहते हैं, प्लीज उसको दिमाग में रखा कीजिएगा, एग्जाम में आपको आउटपुट देना होता है, ठीक है। तो आप आउटपुट का प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में इस चीज का रेस नहीं है कि कौन कितना ज्यादा नोट्स पढ़ रहा है या कौन कितना ज्यादा याद कर रहा है, याद करने का नहीं है, वहां पे है कि रिटेन कितना कौन कर पा रहा है। तो आप जो प्रैक्टिस करना है आपको, आपको इनपुट की प्रैक्टिस नहीं करनी है कि आप पढ़े जा रहे हैं, नोट्स को पढ़े जा रहे हैं, ये इनपुट वाला सारा केस है। तो इन ब्रेन में जो पाथवेज है ना, दैट विल बी स्ट्रेंथन फॉर इनपुट, ठीक है। वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको इनपुट देना ही नहीं, यू हैव टू गिव आउटपुट्स देयर। तो आप ब्रेन के उस पार्ट को प्रैक्टिस कराइए, उस पार्ट को स्ट्रेंथन कराइए, उन नर्व्स पाथवेज को स्ट्रेंथन कराइए विच आर पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर गिविंग आउटपुट्स, ठीक है। तो सवाल लगाइए, 3-4 बार बोल चुके हैं, इस पे भी अगर आप लोगों ने नहीं किया ना फिर बताएंगे आप लोगों को हम। चलिए, आंसर भेजा किसी ने, हाँ, रिफत ने भेजा बस आंसर। चलिए, वेरी गुड रिफत। So here I will get 1 2 carbon and then a Cl plus S3PO3. Here I will get again the same thing with Cl, but here I will get POCl3 plus HCl. Here I will get Br, POBr3 with HBr, and here I will be getting I plus POI3 plus HI. हनीफा का आंसर नहीं आया, व्हाट हैपेंड हनीफा? अरे इस किस बच्चे के कॉपी में लिख रहे हैं आप जैद? हाँ जैद, Sir, I've sent it. अच्छा हनीफा आपने भेजा है। जैद, Yes, I changed my notebook. वो फुल हो गई थी तो किसका आज उठा लिया आपने? हाँ
हाँ, ये ये चार भी चार इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ये 4 लाइन वाला बच्चों वाला नोटबुक उठा लिया आपने। सही है, रख लिया ऐसे। अच्छा ठीक है। हनीफा, अच्छा ठीक है, शायद आपका अभी तक आंसर नहीं आया है मेरे पास, आ जाएगा थोड़ी देर में। ओके, नाउ राइट रिएक्शन विथ थाइनिल क्लोराइड। ये भी रिएक्शन हम लोगों ने हालोल्किन हालोरीन में देखा हुआ है। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। हनीफा आ गया आपका आंसर, एक सेकंड। चलिए बहुत सही। राइट हियर alcohols react with SOCl2 to form chloroalkanes. SO2 and HCl. Generic reaction is alcohol plus SOCl2 phenyl chloride. It gives me RCl plus SO2 which is a gas and HCl is which is a gas. ठीक है, इस रिएक्शन से सवाल को याद आया आप लोगों को, रिफत, हनीफा एंड जैद? इस रिएक्शन से हालो अल्किन हालो, हाँ जैद बताइए क्या सवाल है? सो हमें इसके अंदर why do we why do we prefer this reaction in the industrial processes? Can we say हनी, because अच्छा एक सेकंड we एक get सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। हनीफा एंड रिफत, आपको जवाब समझ में आया क्या होगा? कुछ याद आया अभी आप लोगों को? रिफत टेल मी, कुछ याद आया? Sir, I remember the reaction, but ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है नहीं पता? हनीफा आप बताइए। यस हनीफा, I don't know, sir. यू नॉट श्योर, ठीक है। अब ये पता लगाइएगा, ठीक है। जैद वेरी गुड, हमको समझ में आ गया, आपको एग्जैक्टली वर्डिंग्स नहीं आते बट आई अंडरस्टैंड इट, है ना? जो भी आपका जवाब है उसका लेना देना इनसे है, राइट? yes जैद ठीक है। चलिए अब आप देखिए, हनीफा एंड रफत आपकी नोटबुक में ही है, ठीक है। आप पता लगाइएगा ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हैलोअल्केन एंड हैलोरीन। यहाँ पे अल्कोहल का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, अल्कोहल के हिसाब से कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है हैलोअल्केन हैलोरीन के लिए, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना? कुछ रिएक्शन है, जेनेरिक हम लिख देते हैं इनको। ठीक है, अब इसमें तो फटाफट आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने चाहिए आप, है ना? Cl Cl Cl, यहाँ पे Sa2HCl आ जाएगा, ठीक है। अब जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे आपके पास कई बार और कई सारे सवाल आ चुके हैं। दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन, जिसमें मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो लिखिए नेक्स्ट, फोर्थ एसिडिक डिहाइड्रेशन। ओके प्लीज राइट, alcohols undergo dehydration
Dehydration means removal of water. Removal of H2O to form alkenes. अच्छा, अगर कुछ याद आपको डिहाइड्रेशन, हमने ये वर्ड हैलोअल्केन हैलोरीन में भी लिखा था when we were discussing the elimination reaction. So in one of them, one of the examples of elimination reaction that I wrote was dehydration. We did not discuss it because it was a part of alcohol chapter. इस बात हमने वहां भी बताई थी. Okay, so we have dehydration, removal of water, and that is why they are forming alkenes. Elimination जब भी होगा तो आपको कम unsaturated से ज्यादा unsaturated, you will go towards unsaturation. ठीक है, you will go towards unsaturation. That is why it is alkene in the presence of a protic acid. Protic acid का मतलब क्या हुआ? Anything which is going to give you H plus ion. H2SO4 हो गया जैसे, right? Similarly, you have H3PO4. So these are the two acids that we are going to use. HCl वगैरह इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपको पता है अगर हमारे पास HCl होगा, then it is going to give me haloalkene. HX वाला रिएक्शन हो जाएगा. इसी वजह से हम लोग कुछ बड़ा टाइप का यहाँ पे अल्कोहल यूज करते हैं, सॉरी एसिड यूज करते हैं, H2SO4 H3PO4 जैसा. At this temperature is also important, 443 Kelvin. ठीक है, 443 Kelvin. Generic thing that happens here is carbon atom with some bonds, carbon atom with some bonds. You will have hydrogen here and you will have OH here. That means the adjacent carbon to hydroxy group, OH group के adjacent carbon में एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए. And in the presence of H plus and heat, what is going to happen? This whole thing is going to get removed, right? पानी निकल जाएगा, है ना? And we are going to get carbon, two bonds like this, double bond, carbon, and then the bonds like this. Plus H2O. अब इसी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है, तो जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं जहां पे आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन, ओके, सो इफ यू हैव, सॉरी, सिमेट्रिकल एल्कीन तो नहीं, फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, राइट. यहाँ पे आपने क्या यूज किया? H2SO4 यूज किया और थोड़ा हीट दे दिया. ठीक है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? आपके पास ये कार्बन एटम है, इस कार्बन से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा, OH ग्रुप. और इसके एडजेसेंट कार्बन में तो एक ही कार्बन है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास? यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन. नाउ इट इज वेरी इजी, सो आई विल बी फॉर्मिंग CH2, ये CH3 होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर. ठीक है, तो पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई द कार्बन विच इज हैविंग OH ग्रुप, देन आइडेंटिफाई ऑल द एडजेसेंट कार्बन एटम्स. ठीक है, सेम प्रोसेस है. अगर आपको याद है सिट्जेफ रूल, जिससे हम लोगों ने हैलो एल्कीन के लिए प्रोडक्ट्स बनाए थे, सेम चीज यहां भी यूज करनी है, नथिंग एल्स. चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए 1 2 3. प्लीज टर्न द माइक ऑन एंड टेल मी विच कार्बन एटम. जो पहले बोलेगा उसको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, आई हैव रजिस्टर्ड नाउ दैट आई मेंटेन दीज मार्क्स. विच ऑफ द कार्बन एटम हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 2 और 3. विच कार्बन एटम हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप? OH ग्रुप कहाँ पे है? 1 2 या 3? 2. वेरी गुड. ठीक है, 2. लेकिन इस बार हनीफा एंड रफत ने पहले आंसर दिया. ओके, नाउ यू गाइस टेल मी 2 के कौन कौन से एडजेसेंट कार्बन एटम्स है? व्हाट आर द एडजेसेंट कार्बन्स ऑफ 2? 1 and 3. ओके, 1 and 3. जैद ने आंसर दिया, इस बार हनीफा ने आंसर नहीं दिया. हनीफा, यू गॉट इट? यस और नो? टेल मी. I did so. Okay, fine. So we have 1
then we have 3. Are they same? Are they different? 1 and 3 are same or different? हनीफा आपकी आवाज नहीं आती है साफ, आप कुछ कीजिए, हमें तो सुनाई दिया। रिफत आपको सुनाई दिया हनीफा ने क्या कहा? यस रिफत। No. हनीफा कैन यू प्लीज ट्राई अगेन? जैद सही है। यस हनीफा, व्हाट डिड यू से? आर दे डिफरेंट और सेम? हनीफा सेम, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किसी के साथ भी बनाए, वी डोंट हैव एनीथिंग, मतलब कुछ इसमें गलत नहीं है ना। वी कैन मेक द डबल बॉन्ड आइदर फ्रॉम 1 and 2 या 2 and 3। ये दिस रेड atom should be there in the double bond, okay, the one which is having OH group, so you'll form like this। please remember to remove the OH group, ठीक है, यहाँ से OH group हटाना है, and then you have to make the pi bond, okay। and let us look at something else। बताइए, now you tell me here, which carbon atom, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, which carbon atom is having OH group? Please turn the mic on and tell me। ठीक है, तो सबने सही जवाब दिया। Now you guys tell me which carbons are adjacent to the carbon with OH group? Which carbon atom is adjacent to OH group? 1 and 3, very good। Are they same? Are they different? Different, correct हनीफा, they are different। ठीक है, रिफत आपका जवाब नहीं आता है, क्यों है वो? आपकी आवाज भी अब खराब से आ रही है एकदम, ये मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब आवाज ठीक से नहीं आती है। नाउ यू टेल मी, वेयर शुड आई मेक द बॉन्ड? किस किस के बीच में होना चाहिए? प्लीज राइट दिस इन चैट। द बॉन्ड, द डबल बॉन्ड शुड बी बिटवीन 1 and 2 या 2 and 3? है 3 and 3? अच्छा ठीक है, चलिए सेटजेफ रूल आप लोग को याद है, वेरी गुड। OH प्लीज हटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, प्लीज रिमूव दिस OH एंड यू विल मेक अ डबल बॉन्ड लाइक दिस हियर, ओके, विल मेक अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, प्लस यू विल गेट H2O, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग सम रिएक्शंस, आप उसके प्रोडक्ट्स हमें बना के दिखाइए, ठीक है, एंड सेंड इट टू मी इन चैट। प्लीज OH ग्रुप को हटा दीजिएगा, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है, OH ग्रुप को रिमूव नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका। सेंड मी आंसर फॉर दिस वन। Send answer for this one। चलिए 3 सवाल है।
ओके, रिफत ने आंसर भेज दिया। ये CH2 क्यों हो गया रिफत? ये हमें समझ में नहीं आया। बाकी सब सही है आपका, वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट वाले में That was by mistake. I wrote. ठीक है, गलती से। ओके ठीक है। रिफत, आप ये बताइए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपने स्टार्ट किया था 12th स्टैंडर्ड में, और अब यू हैव मच मोर कॉन्फिडेंस नाउ? Yes, sir. अच्छा, उसमें ये बताइए कितना रोल जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीखने को? Hmm? Like how much of this contribution is, like, now you know how to write bond line structure, right? Yes. Now कितना contribution है bond line structure सही हुआ तब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही हो गया? Can I say that? Yes, sir. है ना? So see, this is like, ये चीज कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिस वक्त आपको आ गया, then you will be doing organic chemistry fast, तो उसमें आप प्रैक्टिस ज्यादा कर पाइएगा। गलती भी होती है ना, तुरंत काटा फिर से नया आपने बना लिया, लेकिन वो CS3 लिखते लिखते ना उसमें बहुत टाइम लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही तो हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे ही आ जाता है तो प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिफत आपके लिए भी है। नाउ यू, सिंस यू नो दिस, जिसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक लगे आपको क्लास में किसी जूनियर में, तो उनको बोलिएगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ठीक कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। है ना? आई एम रियली प्राउड Yes. ऑफ यू बाय द वे। लाइक हमको याद है जब इनिशियल डेज था तो फिर हमने बहुत आपको पढ़ाया था, इवन दोज थिंग्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड जो बेसिक्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। ठीक है ना? बट कीप इट अप। ओके, बह मत जाइएगा। यस जैद, वेरी गुड, करेक्ट, ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट। नहीं हनीफा, you see you have done a very big mistake somewhere, see? कुछ रियलाइज हो रहा है? देखिए एग्जाम्पल्स को, फिर आपने जिस तरह आंसर किया है। हनीफा, डू यू सी योर मिस्टेक? ठीक है, देखिए हनीफा, दिस हैज हैपेंड बिकॉज यू डिड नॉट मार्क द एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क द OH यहाँ पे एंड द adjacent carbon atoms. It took less than 3 seconds, है ना? And now you have only two choice to make a double bond, and you can easily see I have to make a double bond with the green one because it is having more number of alkyl groups. As it is, OH group को हटा दिया and then a double bond. Similarly यहाँ पे भी you have a red, highlight this one, adjacent carbons blue and green, and here also green is having more number of alkyl groups. Right? Now again you see here, अगले वाले केस में भी highlight this carbon atom with OH. This is the adjacent one. This is the adjacent one. And then what you have to do? Now you can see that both are same. तो कहीं पे भी आप बना दीजिए। OH ग्रुप को हटा के। हनीफा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आपको थोड़ा भी देखिए, हम तो ये बोलेंगे कि आप इसको कंप्लीट कीजिए। रिफत को हमने जो भेजा था ना, एक आपने सिर्फ रिफत उसी से प्रैक्टिस किया ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो हमने PDF भेजा था आपको? Yes, sir. ठीक है हनीफा, आप एक काम कीजिएगा, एक बार प्लीज गो थ्रू द एक्सरसाइज। हमको पता है कि आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया पता है क्या है, आप उसके ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है हनीफा? आई हैव सेंट यू दैट। ओके, चलिए, सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल जो होगा, तो इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी लुकिंग एट इज द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द कार्बन एटम आल्सो एंड द ऑक्सीजन एटम आल्सो। ठीक है, सो मेनली उसमें हम लोग देखेंगे द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने देखे क्या क्या पढ़ा है।
first thing that we read was, please flip some pages. आज की क्लास के पहले टॉपिक पे जाइए. We started with the questions, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर का था. Then we started with the reaction involving the cleavage of COH bond, in which we saw the major thing was the reactivity order. 3 degree increases the electron density at oxygen atom, making it more polar. That is why it is most reactive. Then we went on to reaction with hydrogen halide. The reactions were already familiar. You have seen this reaction. The thing that you have to remember from here is again the Lucas reagent. And Lucas reagent is used to distinguish the 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. In 1 degree, we need heat. In 2 degree, we need time. In 3 degree, we don't need anything. It gives you turbidity immediately. Okay. प्रोडक्ट्स क्या होंगे? तो प्रोडक्ट्स के लिए हमें ये रिएक्शन लिख दिया है, देखिए, है ना. तो आपके पास क्या एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl रहेगा, तो क्या मिलेगा? क्लोरोएल्केन. ठीक है. नाउ 1 degree अल्कोहल ये रिएक्ट करता है SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू. दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन. इफ यू डोंट हैव कार्बोकेटाइन, देयर इज नो रीअरेंजमेंट. But 2 degree alcohol, they react with HX via SN1 almost all the times. Okay, and that is why they are often having rearranged product. And we saw this. This is also important because it is there in your NCERT. Then we saw one of the reaction in which we have a 1 degree alcohol. This is 1 degree alcohol, but it is not going via SN2 mechanism. Why? Because of a bulky group. The reason for this is the same as we have given reason. देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा ना, CH3. This is neopentyl. Now this is neopentyl alcohol. Haloalkane, haloarine में, अरे आपकी ओहो है ना, तो ठीक है. Send me reaction. देखिए, ये देखिए रिएक्शन दिख रहा है. देखिए यहाँ पे आपके पास सेम है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, राइट. तो सिंस नियोपेंटाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो SN2, द अबव रिएक्शन विल हैपन बाय SN1. ये SN2 क्यों नहीं देते? आई थिंक इसका रिएक्शन यहाँ पे है आपके पास आखिरी में. हाँ, सी neopentyl halide is a primary haloalkane, but it still does not show SN2 reaction. ठीक है. So similarly, neopentyl alcohol is primary alcohol, but still it does not show SN2. Why? Because high steric hindrance at alpha carbon, the nucleophile is not able to attack from the backward direction. Hence it does not show SN2. ठीक है. तो सेम रिएक्शन आपके पास क्या है, अल्कोहल में भी होता है. अरे अल्कोहल में भाई ये स्लो हो गया मेरा कंप्यूटर. चलिए, ठीक है. So we saw that it is neopentyl alcohol, but still showing what SN1. And यहाँ पे we are having methyl shift. Then phosphorus halides, not very important. You just need to know the products. और ये प्रोडक्ट बनाना भी बहुत आसान है. PCl5 लगेगा, दिखेगा तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि हैलोअल्केन बनना है. थाइनिल क्लोराइड आपको याद रहना ही चाहिए because it is